हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान एंड इसके आंसर पे आते हैं। फार्म इनपुट्स एंड मैनेजमेंट इन एडिशन टू हार्श एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस, लिमिटेड एक्सेस ऑफ इनपुट जैसे लैंड, इरिगेशन वाटर, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, फार्म ट्रेड मार्केट्स की क्या लिमिटेड है टू ग्रोथ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट राजस्थान। इससे एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है इन कारणों से। द लिमिटेड एक्सेस टू इनपुट एंड अनस्टेबल क्लाइमेट कंडीशन रिजल्ट क्या निकलता है? प्रीडोमिनेंस ऑफ लोअर प्रोडक्टिविटी, रिस्क मिनिमाइजिंग एंड subsistence oriented farming system capable of resistance against drought as well as able to produce a marketable surplus in year of good monsoon rainfalls. There is a need to strengthen the input delivery system in the state. जरूरत है हमें समझना स्ट्रेंथ को, आगे मतलब आगे बढ़ाना, ताकत देना, जिससे इनपुट की डिलीवरी जो सिस्टम है स्टेट में इंक्रीज हो। सीड्स एंड फर्टिलाइजर। सीड्स क्या है? सीड्स इज इन कंसिडर्ड टू बी कैटलिस्ट, मतलब ये भैया मुख्य स्रोत है जो चेंज इन एग्रीकल्चर। The Green Revolution in India during the late 60s and 70s bears witness to this truth, and lately during the decade of 2000s. But cotton seeds and hybrid maize seeds have shown spectacular result. However, the availability of quality seeds जो लिमिटेड है इन द वेरियस पार्ट ऑफ राजस्थान, अवेलेबिलिटी जो है क्वालिटी की सीड्स की, जो क्वालिटी की सीड्स जो है वो लिमिटेड है इन वेरियस पार्ट ऑफ राजस्थान. It can be seen from the figure 4 that there has been significant shortfall in availability of quality seeds in Rajasthan during 2011-12. The shortfall of seed of total requirement during Khari and Rabi seasons was 12.6% and 13.8% respectively. Thus, unavailability of seed in time and adequate quantity वो has a negative effect करती है एग्रीकल्चर के आउटपुट पे. However, the seed replacement rate, the SRR short form, ये improve करती है during the recent past. The SRR of जवार, बाजरा, groundnut, soybean increased by 104.7%, 27.3%, 46% and 64.8% respectively from the 2008-9 से लेकर 2011-12 तक. अब बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है फार्म मैकेनाइजेशन का और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी का. द स्टेट विद ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर, द स्टेट जो स्टेट्स के पास ग्रेटर अवेलेबल है फार्म पावर शो हायर प्रोडक्टिव बनेगी एज कम्पेयर टू द अदर्स के कंपेयर में. अलॉन्ग वेरियस टाइप्स ऑफ फार्म मशीनरी, वेरियस टाइप फार्म की जो मशीनरी हो गई, फार्म मशीनरी हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, पावर टिलर्स हो गए, डीजल इंजन हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, मेजर वंस है. इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड में, अकाउंटिंग ऑफ अबाउट 1/3 of the global productions. The pace of farm mechanization has been satisfactory during last couple of decades. The share of agricultural workers or share had drought animals in the total labor force has come down from 63.5% in 1971-72 or 13.67% उन 2009 से लेकर 10 तक. Whereas the tractors, power tillers, diesel engines, electric motor has gone up from 36.51% to 86.33% during the same period at all India level. The sale of tractors and power tillers in India में significantly increase हो रहा है from 296.1 thousand and 22.3 thousand in 2005-6 से लेकर to 545.1 thousand and 55,000 in 2010 से 11 respectively. Out of total sales of tractors, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में 21% है. अकाउंट्स की तरह 21% किसका? मध्य प्रदेश और राजस्थान का. The electric power consumption is one of the major aspect of farm mechanization. जो इलेक्ट्रिक का जो पावर कंजम्पशन है मेन मेजर एस्पेक्ट रखता है फार्म के मैकेनाइजेशन में. compared to the 20.98% of total power consumption used in agriculture. ये बोला 20.98 जो परसेंट जो पावर कंजम्पशन है वो यूज होती है एग्रीकल्चर एट ऑल इंडिया लेवल पे ड्यूरिंग नो दस 9 राजस्थान कंज्यूम करता 39.42% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर अलोन. As suggested in the state agriculture policy, seed cum fertilizer drill, zero-till drill, laser levelers, and various farm implements and tools need to be popularized along with bullock-drawn implement for small and marginal farmers. Seed dressers, sprayers, weeding implements, and other drug reductions implement are to be popularized. कस्टम हायरिंग सिस्टम वो प्रमोट होती है, पॉपुलराइज होती है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री क्लिनिक्स.
कॉन्सेप्ट की क्लीन को यूज करने से कस्टम हायरिंग सिस्टम है वो प्रमोट और पॉपुलराइज हो रही है। इरिगेशन की बात आते हैं, इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट इनपुट है क्रॉप प्रोडक्शन का। आउट ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में इन द स्टेट 10 से लेकर about 33% एरिया was irrigated है। The net irrigated area about 858.5 lakh hectare है, continue consisting about 34.5% net show area in 2009-10 के सेंसस के अकॉर्डिंग। The cropping intensity and irrigation intensity in the state has gradually declined. The irrigation intensity has declined from 125.5% 2007 से 8 से लेके to 124.9% 2009-10 तक। It can be seen from figure 6 that irrigations from canal and open wells has drastically declined from 38% and 49% 1991 से लेकर 29% to 27% respectively. On the other hand, the gross irrigated area जो है under tube wells has sharply increased हो रही है 9% से लेके 9% 1991 तक to 43% 2009 से लेके 10 तक। Thus, the pressure on groundwater exploitation has considerably increased है राजस्थान में। Groundwater level is available only at the depth of 30 मीटर से लेके 61 मीटर तक ही अवेलेबल है। एंड राजस्थान फार्मर्स डिपेंड है सोर्स ऑफ इरिगेशन जैसे ट्यूबवेल्स, वेल एंड टैंक्स, द पंजाब रिवर्स इन द नॉर्थ, द नर्मदा रिवर इन द साउथ एंड द आगरा कैनल्स फ्रॉम हरियाणा उत्तर प्रदेश प्रोवाइड करते हैं टू ड्राई लैंड ऑफ राजस्थान को। नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान इज इरिगेटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनल। अब अपन बात करते हैं लेबर एंड एग्रीकल्चर वेजेस। द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन in राजस्थान की इंक्रीज हो गई 70.8% 2001 ओवर 1991, इंक्रीज टू 139.2 लाख होगी 1991 से लेकर एंड 237.7 लाख होगी 2001। द टोटल नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स इंक्रीज हो गए 81.8 लाख इन 1981 से लेकर 131.4 lakh in 2001. However, the share of total cultivators in total workforce has declined from 58.8% in 1991 to 55.3% in 2001. On the other hand, the share of agriculture laborers and other laborers in total workforce has increased from 10% and 31.2% in 1991 से लेकर to 10.6% and 34.1% in 2001 respectively. It is worth mentioning that the shares of total female workers has sharply increased हो गए by 232%, increased from 27.33 lakh in 1991 से लेकर to 90.7 lakh in 2001 तक। The share of female cultivators has increased by 20.7%. The share of female agricultural laborers is increased in total laborers has increased by 195% from 4.98 lakh to 1991 to 14.9 lakh in 2001. As far as agriculture wages are concerned, the minimum agriculture wages all the operations was 100 रुपए in 2010 जो कि इंक्रीज हो गए 135 with effect from जनवरी 2011 तक। However, the actual labor rates vary, जो actual rate जो चेंज होती रहती है from 175 से लेकर 225 per man days in a different district of the in the state. Especially after implement हुई इंदिरा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद 2006 में द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म लेबर्स रिड्यूस हो गए थे कंसिडरेबली स्वेन एंड शर्मा मेनली एट द टाइम ऑफ इंटरकल्चर ऑपरेशंस एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। अब बात करते हैं क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर के। However, the formal credit is readily available to elite class people जैसे large और wealthy farmers के लिए वो जो कि ट्रस्ट होते हैं by the institutional lenders क्योंकि their greater repayment capacity. On the other hand, में the access of poor marginal and small farmers to institutional credit is quite limited है उनकी। If we look at the disbursement of institutional credit in rural Rajasthan, it is evident that only 54.4% of target amount agriculture loan has been dispersed हुआ था during 11-12 में। The analysis of the consumptions of agricultural loans by source reveals about 49.1% of total agricultural loans, about 44.1% of total crop loan जो कि dispersed हो गया था commercial bank द्वारा। The cooperative bank disbursed about 30.3% of total loans as agricultural loan. As far as the status of agricultural insurance and weather-based crop insurance is concerned, it may be noted कि we have table 17, table 18, the performance of weather-based crops. Insurance has been much better than the national agriculture insurance scheme से ज़्यादा बढ़िया है। The number of farmers insured under the weather-based crops insurance has increased from 1.67 lakh during Rabi 2007 and to 27.3 lakh during Rabi 2011.
एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर जो है बैकबोन है स्टेट की इकोनॉमी का। 75% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में एंड 62% डिपेंड होती है एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज से जीने के लिए फॉर देयर लिवलीहुड। एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर प्राइमरी रेफर्स टू क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है जो कि प्रोवाइड करती है वास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को। राजस्थान प्रोड्यूस करती है 5.49% of national total food grains and 21.31% of oilseeds. The food grains productions 2016-17 से का है 213.12 लाख टन एज कम्पेयर टू 182.98 लाख टन इन 2015-16। अब लैंड यूज पैटर्न कैसे, लैंड को यूटिलाइज कैसे किया, टोटल एरिया है और ये शेयर कितना है। अब फॉरेस्ट का इतना है, नॉन एग्रीकल्चर यूज, अनकल्टिवेटेड परमानेंट पेस्चर, कल्टिवेटेड वेस्ट एंड 40.38 लाख हेक्टर है और शेयर कितना है 11.78 शेयर। नेट स्टोन ग्रॉस क्रॉप एरिया, ये टेबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग एरिया अंडर मार्जिनल स्मॉल सेमी मीडियम एंड मीडियम लैंड होल्डिंग कैटेगरीज इंक्रीज होगी 21.85%, 14.09%, 5.71% एंड 1.80% रेस्पेक्टिवली इन कंपेयर करें 2004-5 से जो डिक्रीज होगी लार्ज लैंड होल्डिंग बाय 8.0%। However, the 8.07%. However, the state is the highest average size of land holding in the country. ये बोल रहे हैं जो स्टेट है हाईएस्ट, स्टेट जो है हाईएस्ट एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग इन द कंट्री में। डिफरेंट साइज लैंड होल्डिंग आर गिवन द टेबल 3.2 में दे टेबल पे दे रखी है। डिस्पाइट द मेजर चंक ऑफ लैंड होल्डिंग बीइंग बाय मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, राजस्थान द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रेन्स की, मस्टर्ड की, सीड की जो 70% ऑफ द कंट्री के प्रोडक्शन एंड मोर बीन्स की। It is the second or third, fourth largest producer of gram and total oilseed, soybean, wheat and groundnut respectively. ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है, मिलता है अगले वीडियो में।